morning, students. I hope you all are doing well at your places, and today we'll be doing reading comprehension. See, reading comprehension is one of the mostest, very important, crucial part of your English because it is very beneficial for all of you, and it will come. It's like you cannot escape from this reading comprehension part because it will definitely come in. It will come in any of your examination. It will come in your academics, it will come in your competition, it will come in your entrance exam, it will come in your like if you are doing any participate in English quizzes and all. तो reading comprehension से हम अपना पीछा कभी भी नहीं छुड़ा सकते हैं. And if in order to have a good command over it, you all have to keep reading each and every day, because reading is the key skill to achieve each and every writing skill, to achieve each and every grammar portion, to solve the reading comprehensions, because it will definitely help you in reading the comprehensions so clearly, and it will help you out in solving all the vocabulary part. It will help you to improve your writing as well as your speaking skills. It will improve your communication skills with the persons, and you all will have a good and a fluency in English. So reading is the key to all these sections of the English paper that you came across while you are giving your English exam, right? In board exams also, students used to gain a lot of marks in just section A, B, and C. Section D, that is literature portion, is not that important because in that definitely some of the marks will be deducted by the examiner. But in case if you are solving the reading comprehensions and you have done it so correctly, then there is no one who can deduct your marks. And that is the sole reason the students who are scoring at least 100 on 100, it's just because of their reading habits, it's just because of their good writing skills, and this is all just because of the reading habit. So I request and I insist, and of course I force you, all of you, to please make a habit of reading each day at your places. So let's just begin with this reading comprehension. So the title of our chapter is comprehension passage. देखिए comprehension का मतलब ही क्या होता है, चीजों को explain करना. Comprehend means to understand, right? Now read the following passage and answer the following questions which are given below. First, we'll be completing the solve passage, right? The Himalayas, they are the greatest and the highest mountains in the world. Highest or greatest mountains हैं Himalayas हमारे पूरे universe में. There are many peaks in the Himalayas. बहुत सारे peaks हैं Himalayas में, and one of them is Mount Everest. और उसमें से एक कौन है? Mount Everest. It is the highest peak in the world. वर्ल्ड की सबसे highest peak है. इसकी height 8,848 meters है. This peak is always covered with ice. ये हमेशा snow से ice से cover रहता है. Edmond Hillary and Sherpa Tenzing first climb up the Everest. These both persons, they climbed the Everest for the very first time. And Bachendri Pal, she is the first woman who mounted Everest. तो सबसे पहले एवरेस्ट पे आई थी. Many rivers also arise from the Himalayas. Himalayas से बहुत सारे rivers आती हैं. The Ganga, the Yamuna, the Brahmaputra, etc. They are the rivers that originate from the Himalayas. जो कि कहाँ से originate होती है? Himalayas से. Now these are the correct answer. The first is the highest mountain in the world are, we all know it's the Himalayas, right? The height of the mountain Everest, of course, it's given, that is 8,848 meters, right? This river originate from the Himalayas से गंगा यमुना दोनों rivers आती है. Answer is both, right? You have to pick the opposite from the passages. Lowest का देखिए highest होता है and last का first होता है. Then you have to do all the answer the following question, that what are the greatest mountain? We all know Himalayas. ये है वो greatest mountain. You have to name the rivers that originate from Himalayas. We all know it's Ganga, Yamuna, Brahmaputra. And who is the first Indian woman? We all know it's the Bachendri Pal, right? Moving on to the exercise, first we'll be reading the comprehension passage and answer the following questions that are given below, right? First, we'll be completing the passage 1. Now, science is a good servant but a bad master. देखिए साइंस एक बहुत अच्छी कला है, बहुत अच्छी सर्वेंट है, बट एक बैड मास्टर भी है, क्योंकि अगर कोई मास्टर हो जाएगा तो फिर वो चीज़ों को पूरा उसके सैचुरेशन पॉइंट तक जाएगा. साइंस हैज़ मेनी फैसिलिटीज़, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं. कंप्यूटर उसमें से एक है. कंप्यूटर इज़ वन ऑफ देम. वी यूज़ कंप्यूटर्स एवरीवेयर, एट स्कूल, होम, बैंक्स, रेलवेज, एज वेल एज रोड्स में, रोडवेज में, रेलवेज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, बैंक्स में, हर जगह
क्या यूज होता है? कंप्यूटर्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के मेन पार्ट्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मॉनिटर इज द स्क्रीन दैट डिस्प्लेज द वर्ड्स एंड पिक्चर्स. मॉनिटर वो है जहाँ पे चीजें हमें दिखती हैं, राइट? इट्स अ हार्डवेयर पार्ट. व्हेन यू टाइप ऑन अ कीबोर्ड योर वर्ड्स अपीयर ऑन द मॉनिटर. चीजें दिखती हैं मॉनिटर पे जब हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट देते हैं. इफ यू वांट अ पेपर कॉपी, हम उसको प्रिंटर में यूज करते हैं सो दैट वी कैन प्रिंट द वर्ड्स और यू कैन सी द पिक्चर्स. एंड सम कंप्यूटर्स के पास डिस्क होती हैं टू हैव सेव वर्क, एंड अदर के पास सीडीज होती हैं विच लुक्स लाइक द सेम एज वन यू यूज टू प्ले म्यूजिक. जैसे कि हम म्यूजिक के लिए सीडी यूज करते हैं, ऐसे इनके पास भी सीडीज और डिस्क होती है. एंड इफ यू ऐड अ मॉडेम टू योर कंप्यूटर देन यू कैन कम्युनिकेट विद अदर पीपल. मॉडेम इज अ डिवाइस जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. Now you have to completely tick the correct options. Just read down this, do the true and false, and complete all the answers, the following questions on your own, because it's a homework for all of you. Moving on to the passage number 2, right? About penguins. Penguins are the birds that cannot fly. Penguin birds हैं जो कि fly नहीं करती हैं. Their wings are flippers. उनके wings कैसे होते हैं? Flippers जैसे होते हैं, which they use to help them ट्रैवल अप टू दी 30 माइल्स पर आवर इन वाटर. वाटर में ट्रैवल करने के लिए 30 माइल्स तक मदद करती हैं. दे ऑल्सो यूज देयर फ्लिपर फॉर बैलेंसिंग एज दे वॉक. जब वो चलते हैं तो उनको बैलेंस करने में भी यूज होते हैं. पेंगुइन्स मछलियां खाते हैं. दे ईट फिश. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर. पानी में सारा टाइम स्पेंड करते हैं. दे ले एग्स. वो एग्स ले करते हैं एंड रेज देयर यंग वंस ऑन द लैंड. और उनको रेज कहाँ करते हैं? लैंड पे, राइट? देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पेंगुइन्स. बहुत सारे पेंगुइन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एम्परर पेंगुइन्स जो होते हैं दे आर दी लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ पेंगुइन्स. पेंगुइन्स की लार्जेस्ट स्पीशीज कौन सी है? एम्परर पेंगुइन्स. एंड कैन ग्रो टू अबाउट 4 फीट टॉल. 4 फीट टॉल बढ़ सकते हैं और उनका वेट कितना होता है? 100 पाउंड. सम अदर वेल नोन पेंगुइन्स आर किंग पेंगुइन्स होते हैं, मैरकॉनी पेंगुइन्स होते हैं एंड दी एडीली पेंगुइन्स होते हैं, राइट? Moving on to this, you have to complete all these sentences. You have to write the few lines on penguins on your own, right? So I hope you all understood this. This chapter was quite interesting and it is totally based on reading. Now I have given you the homework of the 2 respective reading comprehensions. Just solve it on your own and do this and start revising and keep reading on your own and stay blessed. Thank you.